કેટલા ફોન हाय फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी टू राइड। सो अगेन आज एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। जो आज का वीडियो होने वाला है वो हार्ली डेविडसन 750 के ऊपर होने वाला है, जो बेसिक सर्विसिंग क्या होने वाली है। तो मैं अभी आया हूँ पिंटू भाई के वर्कशॉप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिंटू भाई है, जो मैं पहले भी आ चुका हूँ, 2-3 वीडियो बनाए थे सुपर बाइक के वर्कशॉप। तो आई बटन में लिंक चेक कर लेना। तो अभी पिंटू भाई का वर्कशॉप पे हूँ और हार्ली डेविडसन 750 का वीडियो में सर्विसिंग होने वाली है। तो वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या सर्विस होती है। तो अभी चलो स्टार्ट कर दोगे। चलो पिंटू भाई रेडी? ओके चलो। सो अभी यहाँ पे ऑयल चेंजिंग हो रहा है, जो नया ऑयल मोटोल का हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी उसका प्रोसेस पिंटू पे आपको बताएंगे। तो पिंटू भाई थोड़ा सा क्या क्या और इसको होता है हार्ली में? तो अभी ऐसा है कि जो हार्ली के अंदर ऑयल चेंज करो तो आपको पहले इसके अंदर नीचे यहाँ पे एक फिल्टर आती है, यहाँ पे ऑयल फिल्टर आता है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी इस गाड़ी में तो अभी 2 दिन पहले ही फिल्टर चेंज कर दिया था, लेकिन ये 1000 किलोमीटर चल के आई और बाद में हम अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं अभी नया ऑयल। तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। जब भी आप ऑयल चेंज करो सबसे पहले ऑयल फिल्टर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो अभी ये लगा है, तो अभी इसकी कोई नीड नहीं है। तो अभी सिर्फ ऑयल ही चेंज हो रहा है मोटोल का। ओके
सो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको और मैंने पिंटू भाई को बताया जो सर्विसिंग अभी किया है, इसमें ऑयल चेंजिंग, डिस्प्ले वो सब भी सर्विस हुआ है हार्ली 750 में। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो डिस्प्ले का वो सब आप घर पे रिपेयरिंग ट्राई मत करना, प्रॉब्लम आ सकता है आप सबको। तो पिंटू भाई तो एक्सपर्ट है, मैं जानता हूँ, तो इसका नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कॉल कर सकते हो। बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक रिपेयरिंग करते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो जाते जाते आवाज़ सुन के जाओ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।